Morning dear students and assalamu alaikum everyone. How are you all? Well students, I'm your teacher of subject English. So let's start our lecture of today. So let's see the topic of today's lecture. The topic of today's lecture is question answers of grandma. Means we are going to read about the question answer and then you have to just write down on your booklets, okay? Here you go, you can see the unit name and unit number and the story picture as well. The unit name is grandma. You must be familiar with this story as well, as we have read it before. And grandma, you know that there are some you can see some children around the grandma and they are trying to ask different question from the grandma, okay? And you can see here that grandma is sitting on the rocking chair, okay? She rock her chair sometimes in the forward way and then backward way, okay? Means she is sitting in one distance in one side, and but her chair is rocking like she is taking swinging, okay? She is taking swings in the rocking chair, okay? Here you can see that you can see the boy who is boy Tom. Tom is asking to the grandma that grandma, can you dance like this? And grandma is saying that no, I cannot dance because my bones are weak, okay? Now let's see the next picture. You can see here there is a Sarah, and you can see that Sarah is on the cycle. She is riding the cycle. So she is also asking the grandma that grandma, can you ride the cycle like I'm riding? So grandma is replying her or saying her that Sarah, no, I cannot, I can't ride the cycle, so because my bones are weak, okay? Alright students, you can see here there are some children, okay? Two boys and two girls, and the grandma is pointing something out of the window, like there is a window which is open and you can see a tree there. There is a bird sitting on the tree branch, and the grandma is asking the children that kids, can you see the bird over there out of the window? And the children are saying that yes grandma, we can see. So grandma उन्हें क्या कह रही है कि ओके देन यू शुड फ्लाई अवे एंड प्ले विद इट, कि आप सबको उधर चले जाना चाहिए और उस बर्ड के साथ प्ले करना चाहिए, ठीक है? तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, वो बड़े मज़े से कहते हैं ओके ग्रैंडमा, वी आर गोइंग आउटसाइड टू सी द बर्ड, टू प्ले विद द बर्ड, ओके? एंड देन ग्रैंडमा again start to take rock on her chair and she start to smile, okay? grandma क्या करती है, मुस्कुराने लग जाती हैं, okay? So that was about the story. Here we go, we can see the question here. There are probably 1 to 7 question, but we are going to do only 4 question today. So I will read the 4 question for you. Like number 1 is where is grandma and what is she doing, यानी कि grandma कहाँ है और वो क्या कर रही है, okay? नंबर 2 इज़ व्हाट नॉइस इज़ द रॉकिंग चेयर मेकिंग, यानी कि कौन सा नॉइस है जो कि रॉकिंग चेयर से निकलता है, क्या कैसा शोर हो रहा है रॉकिंग चेयर से, ठीक है? द नेक्स्ट इज़ व्हाट नॉइसेस डू अदर थिंग्स मेक, इसके अलावा बाकी कौन सी अदर चीज़ें हैं अदर थिंग्स से जो कि इसी तरह शोर करती हैं? एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाई डू द चिल्ड्रन गिगल, यानी कि जो बच्चे हैं वो इतना क्यों हंस रहे हैं, ठीक है? So let's see the answer of these questions. Alright students, here you can see the question number 1. Where is grandma and what is she doing, यानी कि grandma कहाँ है और वो क्या कर रही है, ठीक है? So the answer is she is sitting in her rocking chair, यानी कि वो बैठी हुई हैं अपनी रॉकिंग चेयर पे एंड रॉकिंग स्लोली, और वो क्या कर रही है, रॉकिंग कर रही हैं, यानी कि स्विंग ले रही हैं, कभी आगे उनकी चेयर जाती है कभी पीछे जाती है, बट हाउ शी इज़ रॉकिंग इन हर चेयर, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, ओके? आपको याद आ गया ना कि ग्रैंडमा इज़ सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर एंड शी इज़ रॉकिंग स्लोली, ओके? नंबर 2 क्वेश्चन इज़ व्हाट नॉइस इज़ द रॉकिंग चेयर मेकिंग, यानी कि जो रॉकिंग चेयर है उसमें से कौन सा शोर आ रहा है? तो डू यू रिमेंबर द रेड लाइन वर्ड्स इन योर स्टोरी,
कि रेड लाइन में जो वर्ड्स लिखे हुए थे तो वो क्या थे, क्रीक, स्क्वीक, CREAK क्रीक, कोमा SQUEAK स्क्वीक, ओके। यानी कि इस तरह की आवाज़ आती है जब जो ग्रैंड माँ है वो चेयर को रॉक करती हैं, सो द नॉइस विच कम्स आउट फ्रॉम द रॉकिंग चेयर दैट इज़ क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक, ओके। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट नॉइस डू अदर थिंग्स मेक, यानी कि दूसरी चीज़ें जो हैं वो कैसा शोर करती हैं। यानी कि एक तो रॉकिंग चेयर के अलावा बाकी कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसे शोर करती हैं, ठीक है। सो द आंसर इज़ टिक टॉक, यानी कि sometimes if you hear the noise of the clock, so you must hear the noise from the clock like tick tick tick. तो वो कह रहे हैं कि बाकी चीज़ें जैसे चेयर से ऐसी आवाज़ आती है, तो अगर इफ़ देयर आर सम अदर थिंग्स, सो व्हाट काइंड ऑफ नॉइस डज इट मेक, यानी कि किस तरह का नॉइस ये क्रिएट करेंगी। सो द आंसर इज़ टिक टॉक, क्लिप प्लॉप एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट इज़ वाई डू द चिल्ड्रन गिगल, यानी कि बच्चे जो हैं वो इतना खुश क्यों हुए थे। आंसर इज़ दे गिगल, वो इतना खुश हुए थे, इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, टू सी, देख कर ग्रैंड माज आइज़ शट, कि उन्होंने देखा कि जो ग्रैंड माँ की आंखें हैं वो बंद हुई हुई हैं, तो वो बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। वाई दे स्टार्ट टू लाफ, बिकॉज दे वांटेड टू प्ले विद द ग्रैंड माँ, दे वांटेड टू आस्क मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रैंड माँ, ओके। दैट्स वाई दे स्टार्ट टू लाफ, ओके। So students, that were the 4 question we did today. I hope you enjoyed your story and the question answer as well. So you have to do the first thing that you have to see the video, and then you have to just take out your booklets and then start to write down on your booklets that 4 questions, or 4 question answer, okay, and make sure that you are learning it as well. All right students, take care of yourself. Allah Hafiz.